मी Dr. Sanjay Gaikwad, author, orator, and college teacher. Welcome you all for this today's very special session. Yes, today is extremely important session of this online Jnana Festival. माझ्या सन्माननीय मित्रांनो आणि शिक्षक बंधू भगिनींनो, संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राला आपल्या ज्ञानाच्या जोरावरती एक वेगळं वळण आणि एक वेगळी उंची ज्यांनी प्रदान केलेली आहे, असे ऑनरेबल नदीम खान सर आज आपल्याशी रायटिंग स्किल्स वरती भाष्य करणार आहेत. रायटिंग स्किल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट स्किल्स as far as our HSC English textbook syllabus overall curriculum is concerned. And this Nadeem Khan sir is a very versatile personality. Nadeem Khan sir is known for his academic talents. Apart from it, he's extremely, he loves wildlife, and also he is a man who is very famous in media also. As far as the curriculum body of textbook framework is concerned, Nadeem sir is there as a member of Board of Studies, and various training programs have been conducted by him at district level, state level, and divisional level, and so on. So he is going to deal with some of the very important points, and those points are summary writing. That is the question number 2B, summary writing. Then after all, a virtual message. Virtual message is a need of this hour, and Nadeem Khan sir is going to deal that virtual message as well. Then statement of purpose, which is new, which is newly introduced in our curriculum, has been borrowed, has been taken from American system. And then as far as our spoken English is concerned, one of the very important issues is that group discussion. And I'm pretty sure that Mr. Nadeem Khan will handle that group discussion very well. Then email writing, report writing, and interview questions will also be dealt by Nadeem Khan sir. मला माहित आहे की टॉपिक्स भरपूर आहेत, परंतु नदीम खान आमच्या प्राध्यापक अनिल बागडे सरांच्या शब्दात सांगायचं तर बेस्ट ऑफ द बेस्ट आहेत. आणि खरोखरच त्यांच्यापासून आम्ही शिक्षक खूप काही शिकतो आहे. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो आणि शिक्षकांनो, तुम्हाला नम्र विनंती आहे की आजचं हा जे सेशन आहे अत्यंत लाईव्ह सेशन आहे, म्हणजे लाईव्हलीनेस, जिवंतपणा त्या सेशन मध्ये आहे, म्हणून एन्जॉय करा. आणि एक नम्र विनंती आहे विद्यार्थ्यांना, जे कॉमेंट्स तुम्ही टाकतायत ते कॉमेंट्स टू द पॉइंट असू द्या, कारण सर्वात शेवटी आपण ज्या वेळेला शनिवारी आपला शेवट होईल त्यावेळेला आपण या सर्व कॉमेंट्स मधील व्हॅल्युएबल कॉमेंट्स एकत्र करणार आहोत आणि त्याला बक्षीस सुद्धा त्या कॉमेंट्सला देणार आहोत, अर्थातच मार्गदर्शनाच्या स्वरूपामध्ये. सो विदाउट वेस्टिंग अवर मच मोर टाइम, I welcome none but Mr. Nadeem Khan, member Board of Studies. Honorable Khan sir, over to you. Thank you very much, sir. I hope I am audible to you all. Yeah, namaskar. माझ्या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थी मित्रांनो आणि जे शिक्षक माझे मित्र पाहत आहेत त्यांना सुद्धा नमस्कार. Today I have got number of topics to deal with, but at the outset let me tell you that I will be dealing with summary writing, statement of purpose, and virtual message in detail, and other things we will be discussing over the question and answer. As you have any doubts, you can ask me, and that portion will be dealt in non-detail so that I can make some justice to some points. Okay, so let me share my screen and let's begin this Jnana Mahotsav. I hope this is visible to all here. Yeah, thank you very much. So let's come to the very first topic for today. It's summary writing. The activity is part of your activity sheet, question number 2B. It's a comprehension question and it is based on a non-textual passage. It carries 3 marks. The evaluation criteria of summary is covering all important points, 1 mark, language and vocabulary 1 mark, and grammar 1 mark. तर मित्रांनो आपल्याला इथे लक्षात येईल की लँग्वेज, व्होकॅब्युलरी आणि ग्रामर याच्यावर 3 पैकी 2 मार्क आहेत. म्हणजेच आपलं जे रायटिंग स्किल आहे,
जे आपलं अॅक्युमेन आहे रायटिंगचं ते आपल्याला इथं दाखवून द्यायचं आहे. Because summary writing has been introduced to the state board in 9th standard. 9वीं 10वीं के बाद अभी आप 12वीं में summary writing लिखोगे. So it is expected that you have attained some level of proficiency and expertise in writing this activity. And this is not just important for your 12th standard examination. I tell you, this is there in many competitive exams as well as a précis writing. So there are different types of summaries, like there is a gist, there is abstract, there is a synopsis, there is script, précis. So there are different levels, and we have different parameters for these different levels of summary writing. So this is very important in today's information era. This is not just another question for your writing skill. This is not just another question for your board examination. This is the one of the main skills required in today's age to communicate over. As you know, we are in information era. There is big data generated, and to pass on this information, entire data can't be transferred from one place to another. So there comes summary. Now there are certain guidelines for writing a summary. The aim of summarizing of any passage is to enable you to understand the main points and express them in your own language. So what is expected? We don't expect you to pick up the sentences from the passage and rewrite them. We want you to understand the given paragraph and then express it in your own language in short. Next, we want you to read the paragraph carefully. That's why the prescribed paragraph to you is a non-textual one. We call it unseen passage. That is the reason that the paragraph or the material is authentic, and it's आपने वो पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं होता, आप उसको पहली बार पढ़ रहे होते हैं. So you should read it and understand it carefully. This is not mentioned in evaluation criteria, but suggesting title is mandatory for writing a summary, and I would recommend you writing title at the very beginning instead of writing at the end. Now, more important is there should be coherence and cohesion maintained while writing a summary. So you should use your own words while giving the gist or theme of the passage. For that, appropriate vocabulary, grammar, and language should be used. And you should not express your extra opinion or your own thoughts while writing any summary. You should also avoid exact repetition of sentences. This is what I also told you at the very beginning. Because what happens, students, they write some questions and answers. They write some answers to the questions given on the text, the unseen text. And what they do, they just rewrite those answers as a summary. So for students who are, I mean, below average, it's fine. But even for them also, I won't recommend repeating the same sentences again. So what should be done? What things are there? So there are certain parameters, and you should know what summary you have to write. Like the first and very important parameter is the number of words. If you are given any passage of around 200 words or say 250 words, you have to write around 1/3 of the given passage. That is the best parameter. You can go above that, but there is no one best summary. Like I can't give you exact number of words. Like, okay, the paragraph is 250 words. You have to write 72 words. No, I'm not going to give you, because there is no best summary.
And even if we give you one paragraph or one passage for summary writing, and we give you on different days, I'm sure that you will come up with different summaries in different attempts. So that is the beauty of this summary writing. These are certain characteristics of writing a summary. So derivation, coherence, and partiality, these three characteristics we have to maintain. Extract is given, but you have to write an abstract. The thought should be arranged in a logical manner. The ideas given in the paragraph should be arranged logically. Means it should be coherent. And it shouldn't be evaluative. You don't have to be judgmental, or you don't have to be critical. You don't have to write what you feel. You have to just maintain that partiality of the paragraph. Now there are some myths about summarizing. Like you don't have to write summary like an extract. Okay, and it is also not a piece to be analyzed for. Nobody is asking for comments or like critical appreciation. No, it's not like that. Some people think that only removing articles, pronouns, and some prepositions, determiners, and writing some other words, whatever is left over, the skeleton, is writing a summary. No, that is also not a summary. In some cases, articles are also important. So it is not, these are some myths which are there in our fraternity, that this is summarizing is only this. No, it is not a summary. Now there are three stages of summarization. One is topic identification. Second is interpretation or compaction. We will see how compression or this compaction can be done. Third is generation, means writing the summary. There are number of techniques for writing a summary. And if we deal with these techniques, it will take 7 days, 8 days to complete all the techniques. But I will tell you only one, that is compression, that is compaction. Interpretation and compaction, that is the simplest. And there are different strategies also. Now, topic identification. In every given paragraph, there are three important things. One is the theme sentence, or we also call it the topic sentence. Usually, any paragraph begins with this theme sentence, or the sentence which is at the very beginning and which introduces the topic. किसी भी पैराग्राफ में जो सबसे पहला सेंटेंस होता है उसे हम लोग थीम या टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है. वहीं से आपको आपका हेडलाइन भी मिल सकता है, हेडिंग भी मिल सकता है. Then while reading, you have to skim through the paragraph. Skimming is an art of reading to get general information. So don't look for specific points when you are reading any paragraph. Just get general idea what this paragraph is about. And while you are reading, while you are skimming through this paragraph, you just have to mark or underline or just put a dot there under the key points, key ideas expressed in that given paragraph. Now, when it comes to interpretation or compaction, you have your ideas, these key points, and what you can do is just compress, compact those ideas by removing some phrases, by removing some, we call it curse words, like for example, and examples also.
but at the same time you have to keep a focus on words that begins with a capital letter, because those can be the keywords. And those who are very good in language, they can do reinterpretation. Okay, so reinterpretation is just combining two thoughts or three thoughts in one complex sentence and rephrasing it. So you can also go for that, those who are very good in language. Third is generation. And while generating or while writing it, you have to compress it further to increase density. There are certain examples of some dense language use in English language and literature. Francis Bacon is one of the writers who writes in very dense manner, crisp manner. That writing style is called aphoristic style. So in very few words, you express a lot of things. And you have to follow the same thing here. Now, let's practice interpretation. All the students, are you ready for this interpretation? There is one paragraph given here. You have to interpret, compress, and reformulate in ways that are new, using words not contained in the input document. Now, this is interpretation. The paragraph is, Jonas was hungry, he found a suitable place. देखिए, आपको ये पैराग्राफ ध्यान से इसीलिए देखना है क्योंकि आपको मुझे इसका एक सिंगल लाइन में समरी देना है, एक सेंटेंस में. क्या आप दे सकते हैं? आर यू रेडी? Yes, I am getting responses on YouTube. और आपने कहा कि हाँ. So the paragraph is, Jonas was hungry. He found a suitable place, went in, sat down. The waiter brought him a menu. Jonas ordered a hamburger, which he thoroughly enjoyed. After paying, he left satisfied. अभी आप मुझे इसका इंटरप्रिटेशन करके बताइए एक सिंगल सेंटेंस में. Are there any responses? So this is the reply. This is the answer. There were 32 words in the given paragraph, and this has been this has been interpreted in 11 words, not using too many words from the given passage. Jonas was hungry, so he enjoyed a hamburger at a restaurant. Yes, Arshia Patan said Jonas was hungry, so he eat hamburger. Yes, good. Also, there are some responses. Abhinav Pandey on YouTube. हाँ अभिनव पांडे, आप अपना टाइटल लिख सकते हैं. Arya says hungry Jonas ate hamburger and paid for it. Good. Very good attempt. I'm very happy to see all these responses here in the chat on YouTube. Now, there is one more example of compression. Okay, friends. Now, this is very like, take it as a game. Okay. And I'm going to show you how you can compress one sentence and how you can go on compressing that sentence further. है ना? अब ये sentence आपको दिया है. Beyond that basic level, the operations of the three products vary widely. आप समझिए इसको. Beyond that basic level, the operations of the three products vary widely. इसको आपको compress करना है. मैं कुछ example, कुछ steps आपको खुद ही दिखा देता हूँ.
अब इसको मैंने कंप्रेस किया, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? बियॉन्ड दैट लेवल, तो मैंने वहां से एडजेक्टिव जो था बेसिक वो हटा दिया. द ऑपरेशंस ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स वेरी वाइडली, बाकी जैसे का वैसे रखा. ठीक है, इसके बाद फिर से इसको कंप्रेस किया. बियॉन्ड दैट बेसिक लेवल द ऑपरेशंस ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स वेरी वाइडली, जो एडवर्ब है उसको मैंने हटा दिया. सो आपने देखा एक ही सेंटेंस को एक फ्रेज में आपने उसका एडजेक्टिव हटाया, दूसरे फ्रेज में आपने उसका एडवर्ब हटाया, और आप उसको इस तरीके से कंप्रेस कर रहे हैं. नाउ we won't stop here, we will go on compressing this further. Beyond that level, the operations of the 3 products vary. Now I have removed adjective as well as the adverb. Then next step, beyond that basic level, the operations of the products vary. Again, next step, the operations of the 3 products vary widely. Now compression में ये reinterpretation आ गया फिर से. क्या आप सोच सकते हैं कि इसके आगे भी आप बढ़ सकते हैं और इसको कंप्रेस कर सकते हैं? लेट्स सी. The operations of the products vary widely. Now look at the first sentence. Beyond that basic level, the operations of the 3 products vary widely. And this sentence, the operations of the products vary widely. दोनों में मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. The meaning is conveyed, है ना? Now you get to understand. Now we have got our standard, I mean the expected answer length, the parameter we have reached, but I can show you further how this can be narrowed down, और कितना और नीचे इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं. The operations of the products vary. Yes. The operations of products vary. So you can see how we can go on. And I will stop here for 1 minute. और आप जो सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इसका लास्ट क्या हो सकता है, आखिरी सेंटेंस क्या हो सकता है. The products vary. Okay, fine. Arshia. Then I'm enjoying this chat. Great. There are many followers of Bhav here, I can see. Yes, good. Product operations vary. The operations vary. The operations vary by Purvi Solanki. Good, good, good. A lot of examples coming in, lot of answers pouring in. Great. Thank you very much. So let's see. What is the last one? The last one is the operations vary. And thank you all who responded on the YouTube. Operations vary. Here we stop. So you can see at the first sentence and the last, but you don't have to go very far. I mean, when we meet our parameters here, this can be our like ideal summary sentence. Okay. You don't need to go that far. Now, I want to reiterate what I have already told you. This is reinforcement. How to write a summary. First, you will skim the text. Then you will identify and rank the topics to include, the key areas, the key ideas. Okay, then you will create an outline. And if you want, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको
जैसे आप मैथ्स में रफ वर्क करते हो, फिजिक्स में करते होगे, केमिस्ट्री में करते होगे, वैसे अगर आप चाहे तो इंग्लिश में भी रफ वर्क कर सकते हो और एक आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो और उस पे से आप फिर अपना समरी लिख सकते हो. And you are already getting 30 minutes extra, so you have some time to do this thing. Okay. Now write an overview. What is overview? Overview is the main idea expressed in that paragraph. So you have to first write the overview. That will be your first sentence. Then write supporting points. Okay, don't write examples, don't write phrases. Okay, don't write the repeated words. Then third, rephrase the theme and conclude. Give a finally concluding statement. Also follow the writing process wheel. I will tell you what writing process wheel is. Do you know what is a writing process wheel? Okay, we will see it towards the end in another topic. Finally, recheck details, give the title. Okay, don't underline anything. Sorry. These are certain tips for you. Write using summarizing language. See, language, you can go on explaining things and it becomes very detailed. So don't use such a language which uses too many words to express. So be crisp in language, that is summarizing language. You can write like the article claims or the author suggests, so that you understand that this is a summary. Don't forget to write the title and don't write in bullets. Okay, always many times students ask, can we write in number list format? No. So these were some of the tips. Now these are the 3 steps I have told you previously also. These are the 3 steps. First is writing an overview, second is writing supporting point, and third is rephrasing the theme and write a concluding sentence. Now take a pen and paper, एक पेन और पेपर लो और फर्स्ट पॉइंट पे लिखो ओवरव्यू और मेन आइडिया, देन सेकंड पॉइंट पे लिखो आप राइट सपोर्टिंग पॉइंट्स, थर्ड पे लिखो कंक्लूजन. और मैं आपको एक अभी पैराग्राफ देने वाला हूँ. ओके, और उस पैराग्राफ का आपको मेरे को समरी लिख के देना है. एंड आई प्रॉमिस जितने जितने लोग यहाँ चैट बॉक्स में मुझे सही आंसर्स लिख के देंगे, बहुत ज्यादा तो लिखना नहीं है, समरी लिखना है तो शॉर्ट में ही लिखना है आपको, 3 और 4 सेंटेन्सेस बस. राम राठोड म्हणतात सर थोडं मराठीत बोला. बरं राम भाऊ, मी आपल्याला एक पॅसेज देणार आहे, एक पॅराग्राफ देणार आहे आणि त्या एक छोटाच पॅराग्राफ आहे तो आपण ऍज अन एक्झाम्पल इथं पाहूया की समरी रायटिंग कसं करतो आपण. आणि त्याच्यावर तुम्हाला 3 ते 4 वाक्य समरी लिहून इथं आपल्या युट्यूबचं जे चॅट सुरू आहे, सुंदर चॅट सुरू आहे, इथं मला आपल्याला सांगायचं आहे. आणि जे कोणी याचे आन्सर्स बरोबर देतील अशा पहिल्या 3 लोकांना मी पर्सनली गिफ्ट पाठवणार आहे. चालेल? पेन आणि पेपर घ्या. पहिला सेंटेन्स ओव्हरव्यू, दुसरा तिसरा सेंटेन्स सपोर्टिंग पॉइंट, तिसरा सेंटेन्स कंक्लूजन. Now this is the paragraph. I'll give you 5 minutes for this. Take your time. पाच मिनिटं पुरेशी आहे तुम्हाला. तुम्हाला पॅसेज वाचून 4 वाक्य लिहायची आहेत.
विशाल म्हणताय 10 मिनिटं. बरं ठीक आहे, पाहू विशाल आपण. मला वाटत नाही की 10 मिनिटात इतकं लागतील. ठीक आहे आपल्याकडे वेळ. Aurora Borealis is the title. Okay. Somebody has written title as Rainbow of Sky. Okay, fine. अनुराधा तिवारी, एक बार एक्सप्लेन करके बताऊं? ओके, ठीक है, मैं हिंदी में भी बता देता हूं. मैंने पैराग्राफ आपके सामने रखा है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है. आपको 4 सेंटेंसेस में, ठीक है, इसको कंप्रेस करके लिखना है. यू कैन राइट 5 ऑल्सो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. 5 सेंटेंस भी लिख सकते हो आप. अब पहला सेंटेंस जो होगा वो आपका ओवरव्यू होगा कि ये पैराग्राफ किस बारे में है. बाकी के 2 या 3 सेंटेंसेस आप उसके मेन आइडियाज, मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं. और फाइनली कंक्लूडिंग में एक सेंटेंस आपको लिख के उसको कंक्लूड करना है. समझ में आ गया? शांतनु सावंत, बहुत मस्ती चल रही है यूट्यूब पे. बेटा हम सबको ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से. विशाल मालुसरे, see, this is information age, huh? Nothing is hidden nowadays. Om Chaudhary, very good. I am reading your response. The aurora borealis or northern lights are bands of color in the night sky. Ancient people thought that the lights were dragon on fire. The modern scientists are also not sure of what it is. Great. Om Chaudhary, very good. Shweta Gadkari has asked how, I mean the length, summary length, it should be 1/3. Yeah. Ankita Kale has said, change in night with a color. There are many color involved like red, blue. See, Ankita, you don't have to write examples when you are writing a summary, like you are written, you are like red, blue. Okay. So you can rewrite again. Yes, Siddhi Pawar, very good. Yeah. Big hands for all the students who are writing the summary in an online class. The teachers who are watching this, this is, see, you can see the live chat and it is filled with the responses from students. I'm loving this. Great students. Yeah, great. Om, very good. That you already practiced this. Good, good. Which school you are from, Om? Which place? Okay. So 6 minutes and lot of responses there. Great, great. So big hands for you all students who have responded. And I'm going to tell you your surprise gifts. Don't worry. Don't worry. But you have to tell me the name of your school and place. Okay. Good. So let's see the answer. It's here. And don't take it as a like ideal answer or model answer. There is nothing like, there is no thing like a model answer. Okay. All answers are acceptable.
Good. Very good. I'm recording my screen so that I can find out the students and then send the gifts. Good. Kishore Moite, Sakshi Kadam, Shraddha Satpute. Thank you all. Thank you. As you can see, the aurora borealis or northern lights are bands of color in the night sky. This is the general overview statement. Okay. The topic statement, the theme. Supporting points. Ancient people thought that these lights were dragon on fire. Some related it to the heavens on fire. So this is a complex sentence. People were afraid of these glowing and dimming lights. Finally, the concluding statement is, even modern scientists are not sure what they are. So you saw how summary can be written. Okay, fine. Now let's come to our next part. That is the second part of this talk, writing skills. Question number 4A. Question number 4A, first part. It consists of 3 activities. One is writing a virtual message. Second is statement of purpose. And third is group discussion. So there are 3 options. And out of these 3, you have to write any one. Fine. There are 4 marks allotted to this activity. And the evaluation criteria says there are 2 marks on content, 1 mark on flow of ideas, and 1 mark on appropriateness. And this applies to all the 3 types of writing skill activities that are given here, like virtual message, statement of purpose, and group discussion. Now, what is a virtual message? As we have already said that we are living in an age of information. We are living in an information era where a lot of information is being passed on very rapidly. As you know, the communication process. Communication comes from the word communis, means to convey. And earlier, it used to take a lot of time for communication. Now we are just a tap away or a call away, and within a fraction of a second, we get connected to other people. But in older times, there used to be a lot of delay in communication. Even the telecommunication was very slow, like the lightning call. We had to wait for hours and days to get connected to other people over telephone. Now you are very lucky, all you, that you are living in an information era and you have got all the speed and devices for getting in touch. And this chat happening over here on the YouTube, I'm reading this live chat and I'm connected to you using my Zoom. There are other people connected. We are able to see, read, watch. Everything can be done. Now, in this communication era, the channels of communications have changed. जैसे पहले टेलीफोन्स थे, उनकी जगह मोबाइल्स आ गए. उसके पहले पेजर आए थे जब आप लिख के भेजते थे.
लेकिन आजकल विजुअल मैसेजिंग, विजुअल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। आप लोग इमोजीज से बात करते हैं ना, और इमोजीज से भी आगे बढ़ के अभी आप स्नैप भेजना शुरू कर दिए हैं, है ना, स्नैपचैट पे स्टोरीज, ये सब चीजें। सो कम्युनिकेशन धीरे धीरे बदल रहा है। पहले आपको लेटर राइटिंग होता था, है ना, आपको पहले एग्जाम्स में लेटर राइटिंग एक फिक्स फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला जाता था। आज बोला जा रहा है क्या? नहीं, आज आपको एग्जाम्स में वर्चुअल मैसेज लिखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये आज का ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है। और इस इंफॉर्मेशन एरा में आप सस्टेन करें। हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई बोले कि इसको तो वर्चुअल मीडियम का यूज करना भी नहीं आता। आप सारे टेक से भी हो, आपको सारे डिजिटल गैजेट्स पसंद है ना, और इन्हीं का यूज करके आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। टेक्सटिंग पता है ना आपको? टेक्सटिंग, एसएमएस पे पहले चैट्स होते थे, है ना, उसके बाद फिर एसएमएस के बाद व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप पे चैट्स होने लगे। अभी तो व्हाट्सएप के अलावा भी कई सारे मीडियम है जिसपे आप टेक्सटिंग करते हो, चैट्स करते हो। तो ये सारा जो चैट होता है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। पहले फेसबुक पे भी लोग चैट किया करते थे, है ना। तो ये सारी चीजें, जैसे अब एग्जाम में वर्चुअल मैसेज आया तो आप बोलेंगे अरे यार क्या बोरिंग टॉपिक है, वर्चुअल मैसेज पता नहीं क्या है। लेकिन नहीं, ये आपके काम का है। आप जो इनफॉर्मल चैट करते हो व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी अदर कम्युनिकेशन से जो आप इंटरनेट का यूज करके करते हो, वो भी एक वर्चुअल मैसेज ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इनफॉर्मल है, और आपको यहाँ क्या लिखना है, एक फॉर्मल लैंग्वेज में वो लिखना है। अब एक इनफॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, क्रक्स वही होता है ना। इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप स्लैंग यूज कर सकते हो, कुछ अलग वर्ड्स यूज कर सकते हो, इनफॉर्मल वर्ड्स, एक्सप्रेशंस। फॉर्मल लैंग्वेज में आपको एक गिवन फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यूज करना पड़ता है। सो दैट इज वर्चुअल मैसेज, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। इसका जो फॉर्मेट है वर्चुअल मैसेज का, वो इस तरीके का होता है। ऊपर आपको डेट लिखना होता है, फिर टाइम लिखना होता है। वो क्यों? कि यूजुअली ऐसे मैसेजेस किसे कम्युनिकेट किए जाते हैं? ज्यादातर फॉर्मल सिचुएशंस होती है, ज्यादातर, सारी की सारी नहीं। बॉस का मैसेज है, कोलीग का मैसेज है, कोवर्कर का मैसेज है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां ऑफिशियल या फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है, वहां डेट और टाइम का स्टैंप होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो मैसेज कब कन्वे किया गया ये पता होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डेट और टाइम वहां लिखना जरूरी होता है। आप इसमें अगर गिवन डेट है तो लिख सकते हैं, या फिर इमेजिनरी डेट का यूज कीजिए। टाइम भी ऐसा होना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन का टाइम वैसा हो रहा है, समझ में आना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से कि इस टाइम पे ये कम्युनिकेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कलीग ने फोन करके बताया आपको कि ऑफिस में कन्वे कर देना कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ, तो ऑफिस क्लर्क को जब आप कन्वे करोगे तो आप टाइम उस पर कौन सा डालोगे? आपको मॉर्निंग का ही टाइम डालना पड़ेगा। यू कैंट राइट 5 PM इन द इवनिंग। ओके, सो ये थोड़ी ऐसी बातें हैं जो आपको थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ यूज करना पड़ेगा। नेम ऑफ द रिसिपिएंट वो एकदम टॉप पे आएगा, जिसको भी आप भेज रहे हो मैसेज, सैम होगा या समीर होगा, उसका नाम सबसे ऊपर आएगा। देन मैसेज बॉडी, 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस, बस दैट्स इट। उसके ऊपर आपको कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन होगा, कोई भी मैसेज जाएगा तो उसके ऊपर उतना ज्यादा लॉन्ग कम्युनिकेशन यूजुअली नहीं होता, शॉर्ट मैसेज होता है ये। पहले मैसेज की भी लिमिट होती थी 140 कैरेक्टर्स की, पता है आपको, जो अभी 270 कैरेक्टर्स, और अभी तो अनलिमिटेड हो गया है। तो आपको कम से कम शब्दों में वो मैसेज वहां पे कन्वे करना है। ओके, देन लास्टली यू हैव टू राइट योर ओन नेम। फाइन, सो लेट्स सी how to write a virtual message.
आपको ऐसा एक कन्वर्सेशन, ये जस्ट एग्जांपल है, आप ऐसा मत समझिए कि हर बार आपको ऐसा कन्वर्सेशन ही दिया रहेगा। हो सकता है कि आपको इसके जगह कोई सिचुएशन दी गई रहे और वो सिचुएशन पढ़ के आपको बोलेंगे कि आप इस पे एक वर्चुअल मैसेज लिखो। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इसका वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, तो इट कुड बी अराउंड 50 वर्ड्स मैक्स, क्योंकि वर्चुअल मैसेज में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। नाउ आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन या एक्टिविटी, इस पे से आपको एक वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है। चलिए आप भी अब फिर से स्टार्ट हो जाइए। आज मैं आप लोगों से बहुत सारा राइटिंग स्किल का काम करवाने वाला हूँ। अच्छा, और मैं आपको बताना भूल गया क्या, नहीं बताया मैंने कि मेरा यूट्यूब पे लाइव चैट भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, और जो भी लोग इसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे, यूट्यूब पे अच्छे रिस्पॉन्सेस देंगे, उनको मैं सरप्राइज गिफ्ट भी देने वाला हूँ। विशाल मालुसरे, खूप लिहायचे आणि 4 मार्क फक्त. खूप लिहायचे नाहीये विशाल, हे जे आपल्या स्क्रीनवर दिसत आहे हे लिहायचं नाही, दिस इज अ कॉन्व्हर्सेशन. याच्यावरून आपल्याला व्हर्च्युअल मेसेज लिहायचा आहे, हे लिहायचं नाहीये तुम्हाला. पहा, आपल्याला एक सिच्युएशन दिली राहील, त्या सिच्युएशन वरून आपल्याला एक व्हर्च्युअल मेसेज लिहायचा आहे, त्याच्यात थर्ड पर्सनला आपल्याला तो कन्वे करायचा आहे. आता सॅम आणि रॉबिन्स बोलत आहेत, ठीक आहे. सॅम म्हणतो, हॅलो, मे आय स्पीक टू जॉन प्लीज. मिस्टर रॉबिन सेज ही इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मे आय नो हु इज स्पीकिंग. माय नेम इज सॅम, आय एम हिज क्लासमेट, आय एम जॉन्स फादर, इज देयर एनी मेसेज. सॅमनी फोन केला जॉनला, ठीक आहे, पण जॉनच्या बाबांनी, मिस्टर रॉबिन्सनी तो फोन उचलला आणि त्याने सांगितलं की जॉन तयारी करतोय, काही असेल तर सांगा. आता सॅम मेसेज कन्वे करतो, माय नेम इज सॅम, आय एम हिज क्लासमेट, आय एम जॉन्स फादर, इज देयर एनी मेसेज. येस. आता मेसेज हा तुमच्या मेन बॉडी मध्ये जाईल, याच्यातला मेसेज. प्लीज आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे. I was absent from school due to illness. I would like to see the notes which our biology teacher gave to the class during my absence. Mr. Robinson, okay, I will definitely do that. लक्षात आलं काय करायचंय? मी मराठीत सुद्धा सांगितलं आपल्या रिक्वेस्टवर. आपल्याला आता मिस्टर रॉबिन्स आहेत, ते जॉनला एक व्हर्च्युअल मेसेज लिहितील. मग काय येईल सगळ्यात वर, डेट आणि टाइमच्या नंतर जॉन, ओके. त्याच्यानंतर मुख्य मेसेज जो लिहायचा आहे तो तुम्ही मला लिहून सांगा. सिद्धी पवारनी आन्सर लिहिलेला आहे. डिअर John, Sam, your classmate, had called to inform you to bring your biology notebook to school today as he was absent from school due to illness and wanted to see the notes that teacher had given. Perfect. Perfect, Siddhi. Jin has responded, your friend Sam called to ask you to bring your biology notebook as he was absent due to illness and wants to take notes. Superb. Superb. Very good going. Sakshi Kadam says, Dear John, there was a call from your classmate Sam. He asked you to bring his bio notebook to school today. I am writing this message because I had to go to office. Good.
Dear son, your friend Sam need biology notebook since he was absent due to illness. Sent by dad. Very good. आर्य पितृभक्त अंकिता काळे, अजय कांते, सृष्टि शिंदे, सुहानी पाटिल, साक्षी कदम, धीरज गुप्ता, आयशा अली, कविता ठेवर, अनघा भुरे. Great responses. I'm very happy to read all these responses. पायल सूर्यवंशी, आलोक शिवहरे, श्रद्धा सातपुते, ऋषिका बंगेरा. Super job, very well done, and thank you very much for all the response. I really love you all you students. Great. This is the response, or this is one of the responses for that activity. Please take a screenshot so that it stays with you. Great. Responses are still pouring in. I'm very happy to see this. आपल्याला एक सिच्युएशन दिलेली होती, त्या सिच्युएशन वर बेस्ड आपण हा मेसेज कन्वे केलेला आहे. पहा, व्हर्च्युअल मेसेज हा कुणाला तरी आपल्याला सांगायचा आहे, म्हणून तिथं आपल्याला थर्ड फॉर्म यूज करायचा आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. तर याच्यानंतर पुढे चालूया आपण, आणि याच्या संदर्भात काही क्वेश्चन्स वगैरे असतील तर आपण ते नंतर डिस्कस करूया. आपलं पुढचं टॉपिक आहे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. आता स्टेटमेंट ऑफ पर्पज काय आहे, एसओपी. तर as I have already told you, the entire team of state curriculum committee wanted to prepare our students for competitive examinations and for real life situations. अभी आप मुझे ये बताओ कि अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, कितने लोग IITs में जाना चाहते हैं, या कितने लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं, या कितने लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाना चाहते हैं. यानी जो रिनाउंड ब्लू ब्लडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्लू कॉलर, जहाँ से जॉब्स निकलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, ऐसी जगह आप लोग जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आपने सुना होगा कि कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, कोई हार्वर्ड से पढ़ रहा है, कोई स्टैनफोर्ड से पढ़ रहा है. सुना होगा आप लोगों ने. क्या आप लोगों का कभी मन करता है कि आप लोगों ने भी वहां एडमिशन लेना चाहिए? करता है ना. लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, खास करके जो ओवरसीज के इंस्टीट्यूशंस हैं, आजकल तो बहुत आसान है फॉरेन में पढ़ाई करना, इतना मुश्किल नहीं रहा. कभी अगर मौका मिला तो संजय गायकवाड़ सर के यूट्यूब चैनल पे हम लोग फॉरेन के कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लिया जाए इसका भी गाइडेंस रखेंगे, जरूर रखेंगे आपके लिए, क्योंकि लगभग सभी लोग फॉरेन पढ़ना चाहते हैं. वेरी गुड, ठीक है. अच्छे कॉलेजेस से पढ़ना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, पढ़ाई के लिए कोई लिमिट नहीं. लेकिन ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या आपका सिर्फ एंट्रेंस क्रैक करना या फिर वहां पे हाई स्कोर लेना काफी है? क्या लगता है आपको? नहीं. सिर्फ 99% लेके या आउट ऑफ मार्क्स लेके वहां एडमिशन नहीं मिल जाता, क्योंकि वहां एडमिशन लेने के लिए काफी सारी प्रोसेस होती है, एक लंबी प्रोसेस होती है, और उसमें से बहुत ही जो डिसिसिव एक फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपका इंटेंट क्या है, आप क्यों उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्यों वहां से पढ़ के निकलना चाहते हैं, है ना. और वो जो आपका इंटेंट है वो पता चलता है आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से. तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है?
ये आपका एक ऐसा पर्सनल स्टेटमेंट है जिसे आप किसी भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, जैसे यूएस में हो तो ग्रेजुएट स्कूल बोलते हैं, वहां की जो एडमिशन कमेटी होती है वो आपका ये पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ के डिसाइड करती है कि आपके एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है, आपके प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है, और आप कैसे वहां से जब पढ़ के निकलेंगे तो वो प्रोग्राम आपके लिए क्यों सूटेबल है, आपको उन्होंने क्यों लेना चाहिए। देखिए, कॉलेजेस तो बहुत होते हैं, कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अपने मन पसंद के कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका एक मोटिव होना चाहिए, आपका एक पर्पस होना चाहिए कि मैं इस पर्पस से वहां जा रहा हूँ, वहां से पढ़ के मैं निकलूंगा तो ऐसा ही करूंगा। और आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अगर वो कॉलेज बहुत अच्छा है तो ऐसे कॉलेजेस ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो। फिर गाइडेंस मिलता है क्या? नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कि गाइडेंस नहीं मिलता, सच में नहीं मिलता। इसीलिए ये सारा गाइडेंस आपको 12th स्टैंडर्ड में दिया जा रहा है। वर्चुअल मैसेज हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया, ये सारे स्किल्स हैं। ग्रेजुएट्स होने के बाद भी, आईआईटीज के बाद या इंजीनियरिंग के बाद भी, या किसी भी फॉर एनी कोर्स, ओके, अगर उसको ईमेल राइटिंग नहीं आता, या उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना नहीं आता, या ग्रुप डिस्कशन करना नहीं आता, so is that degree of use? No. So that's why all these skills are incorporated here in your 12th standard, 11th and 12th standard, ताकि 2 साल में आप बिल्कुल तैयार होकर निकलें। तो इमेजिन कीजिए कि आपको भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, आपको भी स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेनी ही है, तो आप कैसे लिखोगे? तो उसके कुछ टिप्स हैं, कुछ स्टेप्स भी हैं। सॉरी। सबसे पहले तो आपको आपके आइडियाज, आपका इंटेंट, आपकी जो चाहत है ना, उसको भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कि आप एक कागज और पेन ले लीजिए और आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है उसको वहां नोट करते जाइए। जो भी आइडिया आ रहा है, चाहे वो आइडिया कितना भी एक्सेलेंट हो, चाहे वो आइडिया कितना भी एब्सर्ड हो, whatever, you have to put it down, you have to take it down on the notepad, okay? अब आपके पास आइडियाज है, आपने एलिसिट कर लिए खुद से, और आपके पास अभी आइडियाज रेडी है। नाउ यू हैव टू डेवलप एन आउटलाइन कि आप फर्स्ट पार्ट में क्या रखेंगे, सेकंड में क्या रखेंगे, मेन में क्या रखेंगे, और कंक्लूड कैसे करेंगे। सी फ्रेंड्स, तभी भी मैंने आपको बताया कि कोई भी पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस होता है, दैट इज द टॉपिक सेंटेंस और थीम सेंटेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन in the main part, in the main body, if you are writing something, write your argument followed by one example, then write the second argument followed by another example, and if there is one more point, write the third argument followed by example, and then conclude. So first write the overview, the very first line or very first sentence, we can say. After overview, the argument and the examples, and then the conclusion. This should be your outline. Always, any paragraph you write, any paragraph, be it a statement of purpose, be it an essay, or be it a summary, first overview, then main ideas, but in summary don't write examples, huh? And then the conclusion. You have to follow this. और इन सारे उसमें कोहेरेंस और कोहेजन होना चाहिए। मीन्स अगर आप किसी एक चीज के बारे में लिख रहे हो तो उसी चीज के बारे में लिखना है, यूनिटी फॉलो करना है, और वो लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन। अगर आप किसी एक टॉपिक पे लिख रहे हो तो आपको डेविएट नहीं होना है, दैट इज कोहेजन, एंड कोहेरेंस इज पुटिंग योर थॉट्स इन प्रॉपर मैनर। नाउ you have to write the first draft, and then you have to follow the writing process wheel. अब आप बोलेंगे कि ये writing process wheel क्या है और आपको क्यों नहीं पढ़ा है अभी तक।
जाने दीजिए, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आज हम पढ़ लेते हैं। आर यू ऑल सेट? सो दिस इज द राइटिंग प्रोसेस व्हील। अब कोई मुझे बता दे कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट हियर? फाइनल वर्जन तो नहीं होगा, ठीक है, एडिटिंग है या ड्राफ्टिंग है या प्लानिंग है। यस, समीर शेख सेज प्लानिंग, नसीम प्लानिंग, अर्शिया प्लानिंग, आदित्य, चिन्मय, कविता। ओके, सो नाउ यू, एंड थैंक्स फॉर अटेंटिव लिसनिंग ना, मैं चेक करते रहता हूँ बीच बीच में। प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेज। अभी आपने ब्रेनस्टॉर्म जो किया और आपके पास जो भी आइडियाज तैयार थे, दैट वाज योर प्लानिंग स्टेज। समझ में आ गया? एंड यू हैव पुट इट ऑन द पेपर, दैट मीन्स यू हैव समथिंग इन योर हैंड। सो स्टार्ट ड्राफ्टिंग। अब इस व्हील में आप देखोगे कि प्लानिंग से आप ड्राफ्टिंग पे गए, ठीक है। ड्राफ्टिंग के बाद अगर आपका ड्राफ्ट बहुत अच्छा होगा, अगर आप बहुत अच्छे लिखने वाले होगे, तो आप ड्राफ्टिंग से सीधा फाइनल वर्जन पे पहुंच सकते हो। समझ में आया? आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप सीधा ड्राफ्टिंग से फाइनल वर्जन पे पहुंच रहे हो। लेकिन अगर ड्राफ्ट्स में कुछ गलतियां हो सकती हैं, ऐसा आपको लग रहा है, सो यू कैन गो फॉर एडिटिंग। आप उसको फिर से पढ़ो। और एडिटिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। एक तो सेल्फ एडिटिंग, आप खुद उसका एडिटिंग करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसकी गलतियां नहीं दिखाई दे रही हैं, सो यू कैन डू पीयर एडिटिंग। पीयर एडिटिंग क्या है पता है? आपके क्लास में आपके बाजू में जो बैठी होती है या बैठा होता है ना, वो आपका पीयर एडिटर है, ऐसा समझिए। आप अपनी कॉपी उसके साथ में स्वैप कीजिए, उसको बोलिए वो आपकी कॉपी एडिट करे और आप उसकी कॉपी एडिट करो। मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा मत करना। सो पीयर एडिटिंग इज अ वेरी गुड थिंग। और आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स या ग्रुप्स में कोई बहुत अच्छा लैंग्वेज का कमांड वाला है, तो आप उससे भी एडिटिंग करवा सकते हो, ठीक है। अब एडिटिंग होने के बाद आप कहाँ पहुंच गए? फाइनल वर्जन पे। एंड योर फाइनल वर्जन इज रेडी। कई बार ऐसा होता है कि एडिटिंग करने के बाद भी ठीक से एडिटिंग भी नहीं कर पाए, और फाइनल वर्जन जब आपका रेडी हुआ तो आपको ये समझ में आता है कि अरे यार, मैं लिखने तो एक चीज गया था और मैंने लिख लिया कुछ और, है ना। सो देन यू रियलाइज दैट यू वांटेड टू राइट ऑन पिंटू's papa, but you have written about Pintu's mummy. So this is not your topic and you didn't want to write about it. But somehow you lost the path, and instead of writing about papa, you wrote about Pintu's mummy. So you can go back to planning again and see कि वहां कुछ गलती तो नहीं थी। Okay. So this is a writing process wheel. This is called Anne Rimes writing process wheel. This is given in Jeremy Harmer's book, and from there we have taken this. So you can take a screenshot and always follow. So you can see here कि कोई भी स्टेज से आप वापस प्लानिंग पे जा सकते हो, या कोई भी स्टेज से आप ड्राफ्टिंग पे जा सकते हो, है ना। सो दिस इज अ राइटिंग प्रोसेस व्हील दैट वी ऑल फॉलो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप फॉलो करते भी होंगे सेम प्रोसेस, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कोई जेरेमी हार्मर नाम के कोई बंदे ने, या कोई एन राइम नाम के कोई बंदे ने वहां जाके ये व्हील बनाया, है ना। फॉलो सभी करते हैं, अपने को पता नहीं होता। नाउ गो बैक टू द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब आपको पता है कि आपको राइटिंग कैसे करना है, एक पैराग्राफ राइटिंग प्रोसेस व्हील को फॉलो करते हुए कैसे करना है। कुछ टिप्स हैं आपके सामने जो एसओपी लिखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एसओपी
कैन बी वेरी डिसिसिव। एक आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको डिसाइड करने वाला जो स्टेटमेंट होता है, जो पैराग्राफ होता है, दैट इज एसओपी, है ना। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको एसओपी लिखने के टाइम अभी आपको ये ध्यान में रखो कि आप एक रियल कॉलेज के लिए एसओपी लिख रहे हो। आप ये दिमाग में से निकाल दो कि आप एग्जाम के लिए एसओपी लिख रहे हो, ये पूरा निकाल दो दिमाग में से, तभी वो एसओपी आपका सही आएगा, इंटेंट सही आएगा। एक क्वेश्चन आया है प्रियंका टेम्बे, सर राइटिंग लेंथी आहे का एसओपी ची? हाँ बेटा, राइटिंग लेंथी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको इन डिटेल और इनहेरेंट जाके इनर थॉट्स को वहां पे पावर आउट करना है। So there are certain tips. Out of these 5 tips, if you follow, you won't hopefully you won't get bad feedback. Okay, and this is for your real life, not just for your examination. Make sure you have followed all directions thoroughly, including requirements about margin, spacing and font size. So this is about real life. Okay, even आप अगर अपने एग्जाम्स में एसओपी लिख रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज, मार्जिन सही रखो उसका, कीप एवरीथिंग प्रॉपर। एंड इफ यू आर राइटिंग एसओपी इन रियल लाइफ सिचुएशन, रीड ऑल द डायरेक्शंस थॉरोली कि उनको क्या चाहिए होता है उनके स्टूडेंट्स में। Shraddha is asking how many pages we should write SOP. You don't have to write many pages. Just follow the word limit in examination. Okay. Proofread carefully for grammar, spelling and punctuation. आपके SOP में कोई भी grammatical mistake, spelling mistake या punctuation mistake नहीं होनी चाहिए. And this can affect your score, speaking from the examination point of view, when you are scoring very high. Okay, and when there is wetting of papers, and those who have scored high, their papers go to the moderator and chief moderator, and if your copy is error free, your score is maintained. And if there are mistakes or errors like grammar, some silly mistakes of punctuation, I have seen even my students also, excellent writing, superb writing, but they do some silly mistakes, capital letter, small letter kind of things, comma and full stop kind of things. So punctuation is where it takes a toll. Grammar, no doubt, excellent, but punctuation is the thing that you have to take care of. Now, the original statement of purpose should be around 500 words or more than that. But here, you have to follow a certain word limit. Okay. And if you have written too much, that can also affect your score. Don't write too much. Be clear and concise. Be straightforward in writing. Keep your aim, objectives very clear, and also tell how it is going to be benefited and how it is going to be beneficial, not just for you, but for others as well. So don't write too much. Be clear and concise. And don't repeat expressions or don't give roundabout expressions. Don't do cluttering. बहुत ज्यादा कंफ्यूज, यानी क्या होता है कि एक आध क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, एक आध एक्टिविटी ऐसी होती है कि हम लोग उसमें बहुत अच्छा यानी ज्यादा लिखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ये समझिए कि ज्यादा लिखना मतलब अच्छा लिखना नहीं होता हमेशा। ठीक है, इस एक्टिविटी की डिमांड है कि बाकी वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखते ही बैठे 2 पेज आपका बाकी एक्टिविटीज को टाइम नहीं मिलेगा
देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्टिविटी शीट है, ये जो आपका एग्जाम होने वाला है, ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल का टेस्ट है। ये मैं बार बार बोलता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर acumen or knowledge. It tests your skills, particularly time management skills. ठीक है, आपका लिखने के बाद आप उसको छोड़ दो और बाकी एक्टिविटीज लिखो। एक मेरा रिकमेंडेशन है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के बाद उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और जब आपका पूरा पेपर हो जाए और आपके पास अगर 2 मिनट भी बचा है, तो आप दोबारा उस पे आओ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे, एसओपी पे, और फिर उसको दोबारा एक बार पढ़ो। और अगर ऐसा होता है तो आपका रिस्पॉन्स दोबारा पढ़ने से हो सकता है कि एक लाइन आप ऐसी लिख दे लास्ट में जो सबको पसंद आ जाए और आपके मार्क्स बढ़ जाए। सो दैट वाज टू मच अबाउट एसओपी। नाउ देयर इज 15 minutes left and we have some more other topics like group discussion, email writing and report writing. See friends, report writing is was there in your previous syllabus also, here too. So you all are aware of report writing as well and email writing as well. There are different templates given in your textbook. So now let's discuss about group discussion. अब आपको अगर वर्चुअल मैसेज और एसओपी और ग्रुप डिस्कशन तीनों में से कोई एक एक्टिविटी करनी हो तो आप क्या करोगे? बताओ मुझे आप चैट्स में, कौन सा अटेम्प्ट करोगे? Come on, quick. हाँ, 99% लोगों का कहना है कि वो वर्चुअल मैसेज करेंगे। ओके, गुड। गुड गुड गुड। क्यों शॉर्ट एंड इजी है? तलहा का कहना है कि शॉर्ट एंड इजी है। ओके, भाऊ साहेब का कहना है कि ग्रुप डिस्कशन करेंगे। Okay, first you will see the topic and then you will decide. Okay. Okay, fine, 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 fine. Okay, कुछ लोगों का कहना है कि ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे। Good. So let's see one example of group discussion. I hope this is visible to all. Anil Bagade sir is here with me. Sir, do you remember this example? So now friends, situation is you and your friends including Rahul are on the Juhu beach, Mumbai. You are discussing about the hot weather in Mumbai. You discuss about the cold weather at Mahabaleshwar and Panchgani. So there is a contrast between the weather in Mumbai and weather in hill stations. Write a short group discussion. Hello, sir. Did you ask me something, sir? I'm sorry. I asked you, Anil sir,
Yes. After looking at this example, group discussion, do you remember something? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So friends, this is prepared by none other than Anil Bagde sir, who took the first lesson. Yes, yes. First. It is from Mumbai. Thank you, sir. Yes. Yes. Thank you. With all Thank you. due credits to you, I am using with No, your no. permission. 100%, sir. It is ours only. There is Yeah. nothing that belongs to me. It is for us and for students. Thank you. Thank you, Thank sir. you. So you have to write in around 10 dialogues, and you are very good at dialogues, I know, because all you are doing very good here on online also. So the situation is you are discussing with your friends. So the language should be informal. So friends, there are different situations given for group discussion, and for every situation you have to take care of the language, what language you are using. If it's a formal situation, use a formal method of discussion, use formal, some courtesy words, for example. And when you are with your friends, you can use informal language, but don't use slang in writing, okay? So Sumit says, my goodness, it's very hot and humid here in Mumbai today. Yes, I too feel the same. It's quite different in Mahabaleshwar and Panchgani. Same, even in North also, there is extreme heat during this season. Yeah, it will be comparatively cold there at hill stations, Rahul. You are right, Sumit. It's a delightful experience to be there at Mahabaleshwar and Panchgani during summer. Yes, we miss deep valleys, thick forest, colorful trees, and lush green vegetation in these summer days here in coastal area. But there are no beaches in Mahabaleshwar and Panchgani. Here, we enjoy swimming in the sea and wandering along the seashore on the beach here. Every place has its plus point and negative point. True, but Mumbai and its beaches have a different attraction amongst the people. You know, Juhu Beach is one of the famous beaches in our country. You are right. Every beach has and every place has its own beauty and importance. I support Rahul, you are right. By the way, which season you like the most? Actually, I love all seasons. We enjoy vacation in summer season. We visit different places and eat variety of fruits, etc. What about Suresh? Actually, I love rainy season. I feel rain revives our hopes. Rahul, yes, it makes my mouth water when I think about fruits and other things. I love rainy season also, as I can see the whole nature bathing and sea waves dancing. It makes the atmosphere cool and pleasant. I feel winter is the best season here for Mumbai, as the days are colder, sunny, and pleasant. Yes, Mumbai really is different in winter season. It is pleasant here during these times. So, as you can see, this is just one example of group discussion. Okay, there are many more examples according to situation. Now, you just have to be careful about the situation and the language you are using. Okay, if the situation is formal, use the formal language, and if the situation is informal, use informal language. If the situation is casual, use casual language like this, like by the way, and other things like friends are talking there. So let's talk about the marking scheme. Proper dialogue and content carry 2 marks. Proper presentation means proper arrangement of dialogues carry 1 mark. There should be correct use of grammar and punctuations. And as you know, this is like one-to-one communication. It is happening like a conversation. It is actually group discussion, but it is happening in a conversation mode because the situation is very friendly and informal. So this is the marking scheme or evaluation criteria, and it carries 4 marks. So that was just one example to give you
and tell you about the group discussion. Any more questions there? We can, 9 minutes are left. So if there are any questions, you can just put it in the chat box over there in the live chat on YouTube, and I will try to take this up. Sanjana Gaidani has asked for blog writing. Yes, there will be a different session on blog writing, don't worry. Megha Girase has asked, what is difference between formal and informal? See, these are two situations. So according to the situation, English language also changes. Like in formal language, you have to sound courteous, polite, and you have to speak according to the situation. Okay. So you can say hi guys in a board meeting. Okay. But you can certainly say hi guys, what's going on when you meet to a friend. So in board meeting, you would say hello, good morning. So that is the difference between a formal language and informal language. Hope I have answered you, Megha. Nawaz says about film review. Yeah, film review will be taken by sorry, Sujata Ali ma'am. There are sessions. Please watch this space, the YouTube channel, go to other videos and find out what is the session timings for other topics. Talha asks, how many points do we have to write in group discussion? 10 to 12 dialogues. That's it. Parameshwari asks, do we have to write names or I or me? No, you have to write names only. Don't write I or me. Vishal is asking for film review. So again, what date is it, Sujata ma'am? Film review. Yes, sir. I will be covering the film review as well as the book review tomorrow in my section. Yeah. As well as comparing and speech, writing speech. That is what is going to be covered by me tomorrow in the writing skill section. Great. Thank you very much. So dear students, you have heard from Thank you. the ma'am that she is going to cover all these things. So don't miss any day. Don't miss any session. Good evening, one and all. It's my great pleasure to propose a vote of thanks on this occasion. On behalf of the entire team, I express my gratitude to our honorable speaker, Mr. Nadeem Khan sir, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, for inspiring and encouraging students with your words. Sir, your presentation was fantabulous, excellent, and live in the real sense. While dealing with the topic, you did not forget to take notice of viewers by checking the chat box that made the session really interactive. I must say, you perfectly gave justice to the given topic. Many thanks to you, sir. A big thank you to Dr. Sanjay Gaikwad, sir, for providing an opportunity to students of Maharashtra by organizing such a wonderful event. My special thanks goes to Mr. Gajendra, sir, for his technical support. I must thank to the organizing team for working hard to make this event successful. And last but not least, I am thankful to all the students and teachers for participating in today's session. Thank you everyone once again. Over to you, Gaikwad sir. Ashish sir, Dr. Ashish sir, over to you. Dr. Ashish sir. Hello, am I audible? Yes, sir. audible. Yes, sir. Yeah, you are Okay. audible, sir. Okay. Sorry, sir. There was a technical issue that initial of the step that. Can we have you on video, sir? Hello. Can we have you on video? Yes, sir. Sure. Ashish sir, please start your video. And Okay. In the beginning, due to technical error, we could not show. So this is your second and last chance now. Yeah. Hello. Please.
Please. Yeah, Yeah, you are thank you. audible as well as visible. Thank you. So there was a technical issue. I know that, and I know that I put the cart before the horse. Once I read the book of entitled Think and Grow Rich by Napoleon Hill, where 2 lines of the book touch my soul, that the more gold has been mined from the thoughts of man that has ever been taken from the earth. This is exactly applicable to our today's distinguished eminent didactic keynote speaker, that is Professor Nadeem sir. Dear student, I feel proud to be the part of such an elite organizing team who is illuminating the minds of students, particularly the management of 3 arts, which is going to be turned into the figures. This video series describes that what is to be done and how it is to be done meticulously in limited time. Exactly. Keeping an eye on the same. We organize this 6-day series of this 6-day video lecture series in form of the Dharmotsav. So don't be worried. Don't be worried about as we have the bright spot. In the very first 2 days, Mr. Anil Bagri sir from Balan and Soni madam from Aurangabad, along with Nadeem sir, have already passed the shore of knowledge which could have quenched the thirst of the ignited minds. Today, I'm too much optimistic that an hour of the lecture turned into the real letter day, and I'm too much confident that the students raised their bar under the guidance of Professor Nadeem sir. The management guru of today's series was Professor Nadeem sir, and who imparted you the skill that how to be the master of writing skill by using the every tricks of the book. The investment he made in trilingual with interactive made him paid the best return. I could be in justification to our guest if I could not introduce you in a decent way, because we should have an idea about whom we attended. Professor, this is the introduction of the Nadeem sir. Let me introduce you. Professor Nadeem sir is from the Bhandara with a diverse interest and accomplishment in the field of education, media, and wildlife. He worked as a junior college teacher at Nutan Kanya Junior College, Bhandara. He is a member of Board of Studies. He is an academic coordinator of English Online and Chess Project. He has also worked as a state academic resource person for Tata Trust, RMSA, and British Council. He is an ELT consultant to Government of Maharashtra and many CBSE schools in India. He is a treasurer of AINet, Association of English Teachers, which is an association of AI TEFL, UK, and TESOL, US. Currently, he is pursuing PhD from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. He is certified trainer from the English and Foreign Language University, that is called EFLU, Hyderabad. He has taught refugee students from the Kenya under the Kukuma Innovation Project supported by United Nations for SDG 2030. Before taking up the teaching as a career, he was a professional journalist with mainstream English media like Lokmat Times, the Hitwada, the Times of India, and CNN IBN. He runs his own news portal, www.newskatta.in, to cater the local news from Vidarbha. He is also the director of the startup called the Provigal and Swapcom, which are the learning forum for the young IT geeks. Dear student, teacher can open the door of the success, but you must enter in it. Sir, you are really mesmerized our student. With this short introduction of the keynote speaker and the session, I take your leave now. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thanks for That's wonderful. That's wonderful. सर मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो सेशन रहा, ये सेशन सिर्फ बच्चों के लिए सीखने का नहीं रहा, बल्कि हम जैसे बहुत ढेर सारे टीचर्स इस महाराष्ट्र में हैं जिन्होंने बहुत कुछ आपके इस सेशन से सीखा है. Activity has been introduced, but how it should be introduced is really what you showed, and how the way your approach towards the students, your versatile personality, that one at the same time you are dealing with the topics, you are speaking with the students. So students were very much attracted towards you. At the same time, you fought a battle and you won the battle. You came, you saw, and you conquered. Extremely nice. Thank you very much. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचं हे सेशन अत्यंत महत्वाचं होतं. माझे तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे, शिक्षकांना सुद्धा नम्र विनंती आहे की पुन्हा हा जो व्हिडिओ आहे, आजचं जे सेशन आहे रायटिंग स्किलचं, ते आपण सर्वांनी पाहावं.
इतरांना सांगावं, आपल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा आवर्जून दाखवावं, अशा प्रकारची विनंती मी आपणाला करतो आहे. आणि जे प्रश्न नदीम सरांनी घेतलेले आहेत, त्या प्रश्नांचं जे काही गिफ्ट आहे, सरप्राईज गिफ्ट, ते निश्चितच तुम्हाला मिळणार आहे. त्यानंतर मित्र हो, उद्या आपण पाहणार आहोत तुषार चव्हाण सर हे रायटिंग स्किल्स वरती आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांचे टॉपिक आहे माइंड मॅपिंग, एक्सपान्शन ऑफ आयडिया, ब्लॉग आणि अपील रायटिंग. आणि सेकंड सेशनमध्ये उद्या आपण 2 सेशन्स मध्ये भेटणार आहोत. फर्स्ट सेशन विल बी डील्ड बाय मिस्टर तुषार चव्हाण सर, आणि दुसरं जे सेशन आहे त्यामध्ये स्पीच, कॉम्पेअरिंग आणि रिव्ह्यू यावरती मिसेस सुजाता अली, धरमपेठ MP देव मेमोरियल सायन्स कॉलेज नागपूर. माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे की उद्याचं सेशन सुद्धा आजच्या सेशन सारखंच इन्फॉर्मेटिव्ह, कन्व्हिन्सिंग, पर्सुएडिंग अशा प्रकारचं होणार आहे. तर भेटूया